Well, sum of arithmetic progression and geometric progression or arithmetic and geometric series. अच्छा पहले हम डिफाइन करते हैं सीरीज़ को। तो व्हाट इज़ अ सीरीज़? तो सिंपल हमारे पास प्रीवियसली हमने पढ़ा कि इन एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म u1 u2 अ नंबर पैटर्न ऑफ दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। बल अगर हम एक प्रोग्रेशन की जो टर्म्स हैं हमारे पास लाइक u1 u2 u3 इनमें जस्ट इनको ऐड कर दें, तो व्हेन टर्म्स ऑफ अ प्रोग्रेशन आर एडेड what we obtained is called a series. तो ये जो रिजल्टिंग सम आएगा, दिस सम इज बेसिकली अ सीरीज। तो एक सीरीज को हम कहेंगे कि गिवन सीरीज इज फाइनाइट इफ इट स्टॉप्स एट सम नंबर, एट सम स्पेसिफिक नंबर, and if it's continue indefinitely, so then we will say that the given series is an infinite series. Like suppose we have a series u1 plus u2 plus u3 plus up to so on plus u100. So this is represent sum of first 100 terms of a particular sequence, a progression. So this is a finite series, whereas in this case the terms, the sum continues indefinitely, so this is called an infinite series. अच्छा well, so sum of first n terms of an arithmetic progression, जो infinite arithmetic progressions हैं, they are divergent, their sum does not exist. But if an arithmetic series is a finite, suppose n terms हैं इसमें, तो जो उसके sum का फार्मूला है, दो फार्मूलाज हैं हमारे पास. The first one is Sn equals to 1/2 times n into a plus l, और जो second फार्मूला है हमारे पास to find sum of first n terms of an arithmetic series is Sn equals to 1/2 times n into 2a plus n minus 1 into d, where Sn is sum of first n terms, a is first term जिसको हम u1 भी कहते हैं, d is the common difference and l is the last term. तो ये की पॉइंट्स हैं जो हमने याद रखने हैं. अच्छा वेल, ये जो फर्स्ट फार्मूला है ये तब हम यूज़ करते हैं व्हेन वी हैव nth term, लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस. अगर लास्ट टर्म गिवन है कि यहाँ पे आपके इसका सीक्वेंस स्टॉप कर रहा है, सम ऑफ find the sum of these terms of the sequence, तो then हम क्या करेंगे, we will use this first formula. और जो second formula हम तब use करेंगे when we are given first term and the common difference d. तो common difference d इसमें involve है और इसमें last term involve है. Furthermore, ये जो expression Sn involve है, इसको understand करना बहुत important है. Sn is the sum of first n terms. So अगर हम इसमें replace कर देंगे सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस है हमारे पास, तो अगर हम n को रिप्लेस कर देंगे बाय 1, तो वी हैव s1. तो जो s1 है, s1 इज सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इज सिंपली u1 या a. इसका मतलब है जो s1 है दैट इज सिंपली इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस. अगर हम n को 2 से रिप्लेस करेंगे s2, तो s2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज सिंपली u1 प्लस u2. अगर हम n को 3 से रिप्लेस करें s3, तो s3 इज सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, मींस u1 प्लस u2 प्लस u3. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको माइंड में रखना. इससे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है पेपर में. सो s3 इज सम ऑफ. सिमिलरली अगर हम इसी तरह प्रोसीड करें, तो जो sn है इट बेसिकली इंडिकेट u1 प्लस u2 प्लस u3 plus up to un. This is basically sum of first n terms of the sequence. तो जो sn plus 1 होगा हमारे पास, वो होगा u1 plus u2 plus u3 plus up to continue plus un plus 1. तो ये हमारे पास sum of first n terms of a sequence को represent करता है, of a series को represent करता है. For example, in an arithmetic progression, the first term is minus 12. First term हमें given है, first term हमने denote की थी by a और u1 is minus 12. 17th term is 12. Arithmetic progression की जो 17th term is 12 and the last term is 45. L हमें given है 45. या last term को हमने कहा था कि we can denote it by un as well. Find the sum of all the terms in the progression. So well, दो फार्मूलाज हैं हमारे पास टू फाइंड सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ अ प्रोग्रेशन जो हमने प्रीवियसली देखे. वन इज Sn इज इक्वल टू
दोनों फार्मूला शीट पे गिवन है हमें 1/2 टाइम्स n इंटू ए प्लस एल एंड द सेकेंड वन इज एस एन इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स n इंटू 2a plus n minus 1 into d. So to use first formula we need n, a and l. a और l तो given है, n given नहीं है. Similarly to use second formula we need n, a and d. यहाँ पे a तो given है, n and d both are not given. So first we have to work for n and d. अच्छा well, so from given information पहली चीज़ हमें given है कि 17th term of the progression is 12. So using formula for nth term un is equal to a plus n minus 1 into d. n is 17, 17th term given थी, a is minus 12 plus n की जगह 17 put करेंगे, 17 minus 1 is 16d. So u17 is given it's 12, minus 12 को move करें left पे तो positive 12, so 12 plus 12 equals to 16d, 24 equals to 16d, so 24 divided by 16 equals to d, which implies 3 over 2 is equal to d. So जो common difference है for this progression वो हमारे पास 3 over 2 है, but still to find some ये sufficient information नहीं है because we need n for to use both the formulae. अच्छा well तो for n हम again condition use करेंगे for nth term. Now we will use this term 45. un is given it's 45, a हमें given है minus 12, n हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं n minus 1 as it is, और d हमने फाइंड कर लिया in previous calculations it's 3 over 2. तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे n की वैल्यू, तो 45 प्लस 12 को लेफ्ट पे मूव करेंगे ऐड हो जाएगा, प्लस इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स n minus 1, which means 57 equals to 3 over 2 times n minus 1. well 2 दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 57 times 2 3 डिवाइड हो जाएगा is equal to n minus 1. So by working 57 over 3 is 19, 19 times 2 is 38 equals to n minus 1. 1 को ऐड करें लेफ्ट पे तो 39 equals to n. तो ये जो 45 है, this 45 is 39th term of the progression. Now we can use any one of these formulae because we have n, a and d, and for first one we have n, a, l. तो जो formula आपके लिए convenient है आप use कर सकते हैं. Both are given in formula sheet. अगर फर्स्ट वन यूज़ करते हैं तो n की जगह 39 पुट करेंगे, a is minus 12 and l is 45. तो Sn, n is 39, लिख सकते हैं 39, otherwise Sn is also correct notation for this working. So Sn equals to, or S39 equals to 1/2 times 39 times 33. So using calculator, this is equals to 39 into 33 divided by 12. This is equals to 1287 divided by 2. और in decimal form या फिर हम इसे mixed fraction में लिख सकते हैं. This is 643 whole 1 over 2. So this is required sum of first 39 terms of the given progression. Next example, well, the 10th term in an arithmetic progression is 14. So we are given 10th term. This is 10th term u10, and the sum of the first 7 terms. This is sum of first 7 terms of the progression means S7. S7 is 42. Find the first term. We need a of the progression and the common difference in d of the progression. So well, so बिकॉज दो अननोन है तो क्लियरली हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगे. वी विल सॉल्व देम साइमल्टेनियसली टू गेट वैल्यूज ऑफ ए एंड डी. अच्छा वेल, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है फॉर u10, तो हमें nth टर्म का फार्मूला यूज़ करना होगा. फार्मूला फॉर nth टर्म इज un इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वेल un हम 10th टर्म के लिए यूज कर रहे हैं. पुट n इज इक्वल टू 10. u10 इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1 इज 9d. u10 इज गिवन इट्स 14. 14 इक्वल्स टू a प्लस 9d. इसको इक्वेशन नंबर 1 लेबल कर लेते हैं.
Second piece of information is sum of first 42 terms. We need A and D. तो अब हम ये वाला formula use नहीं करेंगे because इसमें L involve है and we need A and D, so we will use this second formula. So using Sn equals to 1 by 2n into 2a plus n minus 1 into d. This is sum of first 7 terms, so n is 7 in this formula. S7 equals to 1 by 2 times n is 7, 2a, a is required, 7 minus 1 is 6d. S7 is 42, so 42, 2 is side पे आके multiply, 7 divide equals to 2a plus 6d. Okay, well, so 7 6 are 42, 6 2s are 12 equals to 2a plus 6d. Take 2 common from right hand side, 12 equals to 2 times a plus 3d. Divide both sides by 2, 6 equals to a plus 3d. This is equation number 2. So we have two equations in A and D. Solve them simultaneously to get A and D. कैसे solve करेंगे? Simply subtract second from 1. Equation 1 minus equation 2. Subtracting equation 2 from 1. 1 is a plus 9d is equal to 14, and the second is a plus 3d is equal to 6. Subtract करेंगे तो sign flip, minus minus, and this one is also negative. A cancel. 9 minus 3 is 6d is equal to 14 minus 6 is 8, so d is equal to 8 over 6, means d is equal to 2 4s are 8, 2 3s are 6, so d is 4 over 3. So this is required value of d. Now for value of a, substitute this value of d into one of above equation, say in equation number 2. Putting d is equal to 4 over 3 in equation 2, 6 is equal to a plus 3 into 4 over 3. D is 4 over 3. 3 cancels, so 6 minus 4 is equal to a, means a is equal to 2. So the first term of the progression is 2 and the common difference is 4 over 3. Well, another example. We are given the sum of the first n terms Sn of a particular arithmetic progression is given by this expression. So we are given an expression for sum of first n terms Sn. Find the first term and the common difference. Well, part A. We need first term and the common difference. A or D are required, and we need A and D in part 1. Given Sn equals to 4n square plus n. Well, from the previous discussion जो हमने start किया था series को, तो हमने पढ़ा था कि Sn is sum of first n terms. So S1 is basically first term. So for first term, put n is equal to 1. Put n equals to 1. So हमारे पास जो S1 है वो आ जाएगा 4 times 1 square plus 1, which is equals to 5. This is 5 is U1 or a first term of the progression. So the first term of this progression, this arithmetic progression, is 5. So a is equal to 5. So the first term of the progression is basically S1, which is 5. Now common difference. For common difference, we need another term. This can also be denoted by U1. So put n is equal to 2. अगर हम n is equal to 2 substitute करेंगे तो we get S2. S2 is equal to 4 times 2 square plus 2, which is equal to 16 plus 2, 18. So S2 is basically U1 plus U2. This means U1 plus U2 is 18. So U2 is equal to 18 minus U1, which is 5. So U2 is equal to 13. So the common difference D is equal to U2 minus U1 is equal to 13 minus 5 is equal to 8. So the common difference for the given progression is 8 and the first term is 5. Now for part B, find an expression for the nth term. So for part B, जो nth term है हमें पता है कि nth term is un is equal to a plus n minus 1 into d.
un is required, a is given, हमने find किया था it's 5 plus n minus 1 into d हमने find किया 8. So un is 5 plus 8n minus 8, which is equals to 8n minus 3. So this is required nth term of the given series.